Good morning, student. Now, yesterday I have discussed function. Function that means mapping. Mapping that means image. But now yesterday I have discussed is a very important question. Ki function is given and find the domain and range. Then question number second. Now function f of x equals to under root 9 minus x square. And find the domain and range of this function. स्टूडेंट फर्स्ट थिंग, जब भी आपको डोमेन फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना दैट मीन्स इज अ y इज रियल and range find करना that is x is real. What is the meaning of y is real? That means y is greater than equals to 0. And what are the value of y is f of x. F of x या y that is the same thing. So y is the under root 9 minus x square. Now squaring on both the side, that is a 9 minus x square is greater than equals to 0. Right? Now 9 is transferred this side, then x square is greater than equals to minus 9. This is inequalities. Right? And jahan inequalities ka sign, then both the side multiplied by minus 1. Right? And both the side multiplied by minus 1, that x square is positive, 9 is positive, but it's just change of the inequality sign is less than equals to. Now the square root, पर inequalities है तो हम both the side square root भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर square root करना है तो 9 का square root is a plus minus 3, तो उस condition में x square का square root is a mod x. Yesterday I have discussed what are the value of mod x. There are two value. One is the positive, then is the first case x is a less than 3, and second is a negative, then x is a less than 3. Minus x is a less than 3. So both the side multiplied by minus 1, then again change the sign, x is a greater than equals to minus 3. So what are the domain? X is less than 3, that means 3, 2, 1, 0, right? But x is a greater than minus 3, that is the minus 3, minus 2, minus 1. So that is the conclusion कि domain of f, it is very clear x is a between minus 3 to plus 3. Same answer are different form, but meaning is same. Then x is a belongs close interval minus 3 to plus 3. So then this is domain of this function. Now find the range. Then x is real, but range find करने के लिए now this function in form of y. So let f of x equals to y, and is the value of f of x is the under root 9 minus x square. Now squaring on both the side, that is the 9 minus x square equals to y square. Then is the x square equals to 9 minus y square. Then is the x equals to under root 9 minus y square. Then is the value of x in form of y. Now find the range, then is start x is real. Domain find करना है तो that is the y is real, but range find करना that is the x is real. X is real, that is then x is a greater than equals to 0. And is the value of x now is given under root 9 minus y square is greater than 0. Then squaring on both the side, 9 minus y square is greater than 0. That is minus y square is greater than 9. But now both the side multiplied by minus sign, then y square is less than 9. Is again there are two values कि y mod y is equals to less than square root on both the side. That is two values. 9 का square root 3, y square का is the mod y. But mod y there are two values. One is the negative and one is the positive. Now is negative, but this is a problem कि y is less than 3 than taking positive, or y is less than minus 3, so y is greater than minus 3. But which values count? But now is given कि y is real. Y is real, that means y is greater than 0, right? Or y is real. So what are the range? What are the range of this function कि y is real?
Yes, what are the range? Then x is a, y is a between 0 to 3. Only 0 to 3. Y is the real, इसका मतलब y real है, मतलब greater than equals to 0, right? तो this value is not count, right? कि यहाँ पर आपको y is minus greater than 3 उससे वैल्यू काउंट होगी. ओनली y is less than 3 and less than 3 that is a 3, 2, 0, 1, 0, right? So that is the range of, यहाँ पर रीजन लिखोगे, इन दोनों में से हमने ये काउंटिंग किया y since y is real, क्योंकि y is real. So student, this is domain and range. Now is the another question, domain and range का. For example, question number 5th, first part of 5th, and then now find the range of this function, but it's the main problem कि range is depend when x is domain is depend, then y is real. So now is the next question. Question number 5th, and function is given 2 minus 3x. First part of 5th, function is given 2 minus 3x. You know student, 2 minus 3x, and only find range. Only find range. 2 minus 3x equals to 0. Student, it is very clear that this question 2 minus 3x when x is a belongs real, that means x is greater than 0. जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू 1, 2, 3, दिस इज डोमेन. यहाँ x बिलोंग्स रियल नंबर को कर रहा है. मैं रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करूँगा, x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा, 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 3 इंटू 1. दैट मीन्स वैल्यू इज माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1. मैं x की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दैट इज 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 दैट इज 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 दैट इज माइनस 4. दिस नेगेटिव जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दिस इज डोमेन, बट जो रिजल्ट आएगा दैट इज रेंज. दैट इज रेंज, राइट? एंड रेंज 2 minus 3x, function f of x is greater than 0. That means 2 minus 3x is greater than 0. That means minus 3x is greater than minus 2. Both the side multiplied, that is the less than equals to 2 by 3. 2 by 3 that means 0 point something. और x की वैल्यू 0 point something, 0 point something अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो that is the result is x is 0. 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, that is 2 minus 0, that is 2. Minimum value is 2. So what are the range? Then x or बाकी all values is negative, then range of f, then x is a belongs minus infinity to 2. 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3 and so on. Right? मतलब आप ये भी कह सकते हो x is a less than 2. Right? So this is range. Same question number 3rd, f of x equals to x when x is a belongs real number. आप रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, आप रियल नंबर रखोगे, x की जगह 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे 1 आएगा, माइनस 1 रखोगे माइनस 1 आएगा, माइनस 2 बाई 3 रखोगे माइनस 2 बाई 3 आएगा, मतलब रियल नंबर रखने पर रियल नंबर आ रहा है. सो व्हाट इज द रेंज? दैट इज द रेंज ऑफ f. दिस इज अगेन सेम कैपिटल R. नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन. सपोज आपके सामने कोई क्वेश्चन है और फाइंड द डोमेन. राइट? नाउ क्वेश्चन f of x equals to x square. Now is another question, f of x equals to x square. Find the domain of this function. F of x equals to x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4. Find the domain.
अब स्टूडेंट डोमेन फाइंड करना है। न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमरेटर कोई भी हो, बट इज डेफिनेटली डिनोमिनेटर। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4? क्या फैक्टर होंगे, राइट? दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के मल्टीप्लाई करने पर 4 और ऐड करने पर 5, दैट इज अ 4 बन जा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x minus x plus 4 equals to 0. So there are two factors, one is the x minus 4 and other is the x minus 1. There are two factors. Then there are two values of x, one is the x equals to 4 and second is x equals to 1. Right? अगर मैं x equals to 4 रखता हूँ तो this function is infinite, this is not defined. x equals to 1 रखता हूँ, this is not defined. बाकी कोई भी रख लो फंक्शन रख लो, फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, दैट इज में रेंज कम डोमेन में काउंट हो सकता है। सो व्हाट आर द डोमेन? डोमेन ऑफ f दैट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 and 1। कि आपकी वैल्यू 4 और 1 रखते हो तो उस पर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो व्हाट आर द डोमेन? फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। जिस वैल्यू पर डिफाइन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट रियल। नाउ इज अनदर क्वेश्चन। सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, राइट? एंड नाउ क्वेश्चन न्यूमरेटर इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर नाउ फैक्टर 12 एंड ऐड करने पर 8, सो 6 2s are 12, then x square minus 6x minus 2x plus 12. That means is the x plus 1 whole square as it is, numerator as it is, denominator is the factor is x minus 6 and x minus 2. That means 6 रखने पर function is not defined, 2 रखने पर function is not defined. This is perfect square, function is defined. So what are the domain? That is the real number except 6 and 2. जो फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा वो रेंज में काउंट नहीं हो सकता, वो डोमेन में काउंट नहीं हो सकता, राइट? सेम आपके पास में डोमेन और रेंज के क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5th, 3rd, 4th, 5th आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट नाउ इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कि द रिलेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज गिवन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 1.1 minus f of 1 and 1.1 minus 1. This is again very simple question. f of x equals to x square is given. अगर आप x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो f of 1 की वैल्यू आती है, 2 सब्स्टिट्यूट करते हो दैट इज f of 2, 3 सब्स्टिट्यूट दैट इज f of 3. बट नाउ सब्स्टिट्यूट 1.1 क्योंकि आपको f of 1.1 की वैल्यू फाइंड करनी। सो नाउ दिस क्वेश्चन f of x equals to x square is given and find the value of f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1. इसकी वैल्यू फाइंड करनी। नाउ सब्स्टिट्यूट x is 1, f of 1 की वैल्यू स्क्वायर ऑफ 1 is 1. नाउ सब्स्टिट्यूट f of 1.1 क्योंकि मुझे f of 1.1 की वैल्यू चाहिए तो x की जगह 1.1 सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज द 1.1 का स्क्वायर, राइट? सो now the square of 1.1, 11 का square हो 121, that is 1.21 and now substitute all value, f of 1.1 की वैल्यू 1.21, f of 1 की वैल्यू 1, right? 1.1 minus 1 that is 0.1, right? 1.21 में से 1.0 that is 21, 0.21 and 0.21 upon 0.1, point cancel 10, point cancel 100, that means 0 to 0 cancel 21 upon 10, that means 2.1. This is answer. So student, this is very easy exercise, miscellaneous exercise. Please solve. Thank you.